मैडम देखेंगे फोटोग्राफर एक्सपर्ट डिलीवर करते हो देखेंगे नहीं आपके हिसाब से या दिख रहे हैं? दिख रहा है। अच्छा ठीक ये तो सर जूम करना है तो हो जाएगा। नहीं जूम नहीं, जूम आउट जूम ही ठीक है। जूम आउट करोगे तो आगे आगे का दिखे, पीछे वाले नहीं ठीक है। एनीवे सो good morning all of you. We have esteemed speaker from HNB Gadwal, Dr. Vijay Laxmi 380, and she is currently working as an assistant professor in high altitude plant physiology research center in Birla campus. Madam done his PhD from HNB Gadwal in 2018. She has more than 5 years of experience in research and 3 years as a more than 5 years in teaching and total 6 to 7 years of experience. Her area of expertise is deosis plants, conservation biology, ecology of plants, plant propagation technique, biochemistry of high altitude plants. Madam a recipient of teaching assistancy in MSc for 3 semester, qualified NET JRF in life science for 3 years 2013, 14 and 15. Madam published more than 25 articles in a very reputed conference and journal, and Madam has more than 2 research sponsored project against his name. So without further delay I would like to invite Madam. Namaskar and for the welcome. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, sir. Over to you, madam. Shall we start? Yes. Okay. Introduction to here. Okay. Then go to the topic. Okay. Topic which topic है मेरा agri food supply chain management, and as we know we all are suffering from biggest thing, that is climate change. How climate change is impacting agri food supply chain. As we know, the climate change is affecting each aspect of life and each nook and corner across the globe. Okay, climate change is not a new thing. Actually, we all know about the ice age, then global warming. Then इसका मतलब ice age आई तो मतलब global warming फिर से हुआ है, तो मतलब पहले भी हुआ है, ठीक है, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे. But that was natural process. और वो डिले भी थी, स्लो भी थी, लेकिन अभी क्या है, that the process is faster due to the anthropogenic activities. Okay, तो we will discuss it further. ये आगे कहाँ से जाएगा? ये ठीक है. Okay, this is PDF. Okay, this is we are talking about the food supply chain. तो उसके बारे में बात करेंगे. So first we see a simplified food supply chain, agri food supply chain, and each component and player of a food supply chain, producer, which are generally farmers, or every आजकल तो कुछ industries भी involved होती हैं इसमें, contract farming वगैरह. Okay, producers mainly हम इसको कहेंगे. The processing and storage process, transports, then retailer or exporters, and the consumers. Each and every component. The second one is little bit expanded. Okay. अब आते हैं हम अपने mainly topic पे. Okay. What are the processes which hindering the supply of the food chain? Okay. तो हम तो mainly हमारा topic climate change है. We are talking about the climate change. But let's see some discuss करते हैं पहले कौन-कौन से component है which generally hampering a food supply chain or increasing the risk of nutritional or food securities. Okay, so they are all we know. We are growing continuously. The population and the population of the world or the global
global population is increasing continuously and लोग जो है ज़्यादा आप सुनते आ रहे हैं urbanization, ओके ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, विलेजेस जो है लोग छोड़ रहे हैं रूरल एरियाज को, तो ऑब्वियसली एक तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा उन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं जो फार्मिंग करते हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो डबल क्या है प्रॉब्लम्स है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हंगर भी बढ़ेगा, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन फूड प्रोड्यूस करने वाले लोग क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। इसके अलावा लैंड तो हमारे पास एक ही है, एक ही अर्थ है, और आगे हमें लैंड यूटिलाइज करने के लिए हमें किसी दूसरे प्लैनेट पे जाना पड़ेगा, जो चल रहा है, प्रोसेस आर कंटिन्यूइंग, ओके। देन लैंड यूज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आप इससे और भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज को न्योता दे रहे हैं। एज यू आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुना होगा कि अमेज़न की फॉरेस्ट जो है पूरे कट कर दिए गए हैं फॉर कॉफी प्लांटिंग, फॉर बनाना प्लांटिंग, ओके, एंड पाम ऑयल, ठीक है। तो इसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए लैंड को यूज कर रहे हैं, या माइनिंग की जो है, माइनिंग के लिए होल फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं। अभी इंडिया का ही एक केस था कोल माइनिंग के लिए, शायद आई थिंक मध्य प्रदेश में वो केस आया था, छत्तीसगढ़ में। तो उस तरीके से जो है ये हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, हैम्पर कर रही है सिचुएशंस को। मतलब एक तो अपने आप में ही प्रॉब्लम है, उसके अलावा अदर प्रॉब्लम्स को भी क्या कर रही है, इन्वाइट कर रही है, ओके। देन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल अनस्टेबिलिटी, वी ऑल नो अबाउट इट, आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कॉन्फ्लिक्ट, हंगर एंड फेमाइन, अदर आजकल ये आप रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, एज वी नो कि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं वीट सप्लाई जो है हैम्पर हो गई है, या सनफ्लावर ऑयल मेनली, ठीक है। तो देयर आर वेरियस अदर फर्टिलाइजर्स के बारे में भी हमने भी सुना कि फर्टिलाइजर की सप्लाई भी जो है हैम्पर हो रही है। तो दिस कम, या जो डिफरेंट हमारी जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं, जैसे स्पेशली दिस साउथ अफ्रीका में या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स पे जो कंट्रीज हैं, या हमारा मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जैसे हमारा सीरिया है या अदर कंट्रीज जहाँ पे लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है फूड सप्लाई जो है हमारी हैम्पर हो जाती है, या न्यूट्रिशनली जो है न्यूट्रिशन लिमिटेशंस जो है वहाँ पे पैदा हो जाती है, ओके। देन देयर वर सेवरल एंटी ग्लोबलाइजेशन स्ट्रैटेजीज, आप बहुत सारे कंट्रीज की सुनते होंगे कि वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट दिस थिंग, या दे हैव टू बैन द पर्टिकुलर थिंग, जैसे हमें इंडिया को बैन करना पड़ गया था वीट एक्सपोर्ट, या उसी तरीके की कई सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं दे हैम्पर द फूड सप्लाई, ओके। नाउ अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड इम्पैक्ट्स ऑन द फूड सप्लाई चेन, ओके। तो when we are talking about the factors of the climate change और environmental variability, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं। सिंपली जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो एक तो वो फैक्टर्स होते हैं या वो वेरिएबल होते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए दिखते हैं। जैसे अगर हम अभी हमारी बात करें इंडिया में, तो जैसे मॉनसून, ठीक है, तो मेनली फ्लड, सभी पूरा वो क्या था, फ्लड की जो प्रॉब्लम थी, अगर शॉर्ट टर्म देखें हम सिंपली तो शॉर्ट टर्म के लिए थी, मॉनसून सीजन में थी, अभी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ अदर सिचुएशन है जो लॉन्ग टर्म तक जाती है, जैसे आइस मेल्टिंग या स्नो मेल्टिंग, वो तो कंटिन्यूअसली चल रहा है बहुत टाइम से, और फिर उसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से क्लाइमेटिक वेरिएबल्स की बात करें तो देयर जैसे इसमें है हमारे फ्लड्स की बात की, अवलांचेस हैं, या कोई रॉक वॉक गिर गई, रोड हमारी ब्लॉक हो गई, ओके, एंड टाइडल वेव्स एंड टाइफून या एनी अदर डिस्ट्रक्शन, या फ्यूल सोर्सेस या ऑयल स्पिल्स वगैरह हो जाते हैं कभी, या एनर्जी सोर्सेस में कोई डिस्ट्रप्शन हो जाता है, दैट ऑल कॉजेस द स्मॉल टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस और प्रॉब्लम्स, ओके। देयर आर सम अदर लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, स्पेशली द इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो लगातार बहुत टाइम से इंक्रीज होता जा रहा है, स्टिल एस्टिमेटेड कि 2030 तक ये 4 डिग्री और इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार जो है हमारी जो सी लेवल है, क्योंकि आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, तो सी लेवल क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम हो रही है, इफ अगर हम बात करें ऐसी जगह की जो कहाँ जो आइस फेल्ट एरिया में है, जैसे हिमालय सपोज दैट, तो इट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्लड एज वेल एज द ड्राउट, बिकॉज रेनी सीजन में तो फ्लड है, लेकिन अदर जो सीजन है उसमें क्या है फिर वाटर स्कार्सिटी। ओके, तो सब जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक वेरिएबल्स हैं वो अपने आप में तो लॉन्ग टर्म है ही, लेकिन उनके साथ कुछ शॉर्ट टर्म जो एनवायरमेंटल वेरिएबल है वो भी क्या है एसोसिएटेड है। So, for example, they are causing the floods, okay, and they cause, अगर हम बात करें जो weather है, it become erratic। अभी हम बात करते हैं ना मॉनसून पैटर्न चेंज हो गया है, या मॉनसून हमारा एक्सटेंड हो गया है, या जो समर डेज है वो लॉन्गर हो गए हैं, मतलब मंथ्स जिनमें समर डेज जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है, बहुत सारी चीजें इनके साथ क्या है एसोसिएटेड। Now, अब हम बात करेंगे the climate change impacts which transforming the food supply chain. Okay, so there are many things and many factors. Okay, तो पहले हम बात करते हैं जिसकी सभी बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड देन इंक्रीजिंग रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस। और वी नो कि जो जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया, इट कॉजिंग it creating a cascading effect. Okay, it is creating the flood, the irrigation problems, it increasing the incidences of drought or any other environmental irregularities. Okay, okay, so that's why it आगे स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि what are those cascading effects. Okay, तो there are economic जो इफेक्ट हैं melting ice or snow के, they permanently affecting the economic and agricultural productions in many regions. Okay, these changes the seasonal water availability pattern, and finally it resulted in flood and disrupt the pattern of farm production. Okay, melting snow and ice may change the pattern availability of water irrigated agriculture. Especially ये हमने अभी पहले भी बात की, मैंने आपको हिमालय का एग्जांपल दिया था, especially in the Himalayas where it causes flood in rainy season but the irrigation problem in the dry season. Okay, now अगर हम फूड सप्लाई चेन की बात करें तो ये पहले हमने प्रोडक्शन की बात की कि प्रोडक्शन हमारा हैम्पर हो रहा है क्योंकि जो फसल है वो फ्लड से खत्म हो रही है, या जो है हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। ओके, बट जो अदर इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व है फूड सप्लाई चेन में वो भी क्या हो रही है हैम्पर हो रही है, बिकॉज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज या ड्यू टू द फ्लड जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं या वो उनमें प्रॉब्लम हो जा रही है, वाटर वगैरह लॉग वाटर उनमें भर जा रहा है, कोई और प्रॉब्लम उनमें हो जा रही है, रोड्स जो है हमारी ब्लॉक हो जा रही है। ठीक है, और जो अवेलेबिलिटी है सप्लाई की वो क्या हो रही है अल्टीमेटली ब्लॉक हो रही है। इसके अलावा द रिस्क ऑफ फ्लड इट मे necessitate moving process and storage facilities and may require added investment in the transportation. Okay, the changing climate जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट चाह रहा है मिटिगेट करने के लिए कंडीशंस को for the storage facilities and for the transportation of the supply. Okay, okay, obviously क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की कि बहुत चीजें अफेक्ट हो रही हैं। ओके, then it changes the pattern of farm productions and availability of food supply, may change procurement strategies of intermediary as well as prompt them to invest in agriculture production in regions less vulnerable to these effects. Okay, तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ओवरऑल फार्म जो पैटर्न है उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे कि लोग जो है क्रॉप शिफ्ट कर रहे हैं। आई मीन आप जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की बात करते हैं
तो आज हर कोई हर कोई जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं या एनजीओज हैं वो आपको एक नई क्रॉप सजेस्ट करते हैं कि आप ये लगाइए, या जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारा जो डिपार्टमेंट है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, वी एम्फसाइज ऑन मेडिसिनल प्लांट्स कि भाई आप मेडिसिनल प्लांट लगाइए, इट इज अ सोल्यूशन फॉर द क्लाइमेट चेंज बिकॉज दे आर हार्डी एंड दे कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप एंड समटाइम इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सपोज दैट अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने आपको मेडिसिन प्लांट के बारे में बताया, इफ वी आर सजेस्टिंग अ फार्मर टू गो फॉर द मेडिसिन प्लांट, बट इट कॉजेस, वो तो फिर मेडिसिन प्लांट अगर वो जो है कंप्लीटली फोकस करता है या अपनी जो अदर क्रॉप्स हैं उनको छोड़ के पूरी तरीके से मेडिसिन प्लांट पे जाता है, तो क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फूड सिक्योरिटी क्योंकि उसने खाना उगाना तो छोड़ दिया। और सपोज दैट अगर पूरे फार्मर ऐसे करने लगे सब कोई छोड़ के, तो क्या होगा फिर अल्टीमेटली हैम्पर्ड द सप्लाई। ओके, तो द क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरे फार्म पैटर्न को इस तरीके से क्या करना है, चेंज करना। ओके, next okay, we discussed the problem, then what might be the solution for these problems? Okay, the first solution, that is strengthen the infrastructure. Okay, if the proper storage facilities are available and the infrastructure for protecting from floods such as dams and other facilities, तो इससे क्या हो सकता है कि भाई जो वाटर लॉगिंग कंडीशंस है या फ्लड कंडीशंस है उसमें आप अपनी क्रॉप को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं देन इट कैन प्रोवाइड द वाटर फॉर इरिगेशन इन ड्राई सीजन और इन ड्राउट कंडीशंस। ओके, सेकेंड, generally when we compare in last slide we discussed about long term variable or short term variable, ठीक है। If we want to fight the long term variable it requires a larger investment as compared to short term variables, especially it requires a greater investment on the infrastructure such as storage facilities and dam and other constructions। Okay, then it also required support from public sector as well as from the private sector। Okay, it required the various subsidies, various investment from the government as well as from the private sectors। Okay, one more, कुछ चीजें ऐसी होती हैं या there are certain things which especially which are not governed by या which are not specific in one country। Suppose that we are talking about the ice melting or snow melting in Himalaya, तो उससे हम इंडिया ही तो अफेक्टेड नहीं है ना, all Himalayan countries are affected from the ice melting or snow melting from the Himalaya which causing the flood। तो उसमें क्या चाहिए, we need a multilateral or global level या there should be an agreement which led by the different government or different countries। और आपने सुना भी होगा अगर आप कंजर्वेशन की बात करते हैं या आप बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो we can't fight alone, we require a group, especially if we share a similar ecosystem or a similar type of habitat। in that case जैसे हमने हिमालय की बात की कि if we want to mitigate the problems which arises due to the ice melting in Himalaya, then we required a multilateral organization and international agreements for mitigating the problems। Okay, especially the long-term changes which causes by the climate change। Okay, there will also be opportunity for the private sector as I already discussed, we require the investment from the private sector, especially on the water projects, on the dams, hydropower facilities, and other investment which increase the agriculture productivity and provide the new source of value for the existing facilities। Okay, now
Now, अब हम बात करते हैं कि how climate change is affecting agro ecosystem of a particular place. Okay, जैसे पहले ही बताया था मैंने आपको, climate change is causing cascading effect, and the UN, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report that highlighted the multiple interacting climate and non-climatic risks are compounding and cascading across the sector and region. Okay, and as we already discussed, the weather and climate extreme, it is not work in a boundary or in a nation. It is working on or it is affecting the whole globe. Okay, so we require the impact, either it is economic or social impact, it would be global, not a specific. So we require a global effort. Okay, so how it affecting, as we see in the diagram, infographics, climate change mainly affecting the ocean temperature, sea level, the rain pattern or precipitation, water availability in soil, it degrading the land, it causing the ocean acidification. Again, it changes the gaseous composition of the atmosphere, and they directly, as you can see, there are some extreme events which directly, such as flood या कोई extreme environmental conditions पैदा होती है, it affected the agro ecosystem or finally the economics, directly or indirectly. As we can see, these factors affecting the agro ecosystem, each component of agro ecosystem. They are affecting the aquatic species, they are affecting the cultivated plant species, they are affecting the livestock as well as forest. Okay, the pest and disease incidence, pest infestations and disease incidences are increases due to the climate change. ठीक है, आपने locust swarms के बारे में सुना होगा या incidences के बारे में सुना होगा कि climate change की वजह से किस तरीके से वो incidences increase हो रहे हैं. Okay, आपने एक चीज और भी सुनी होगी कि global warming की वजह से ice caps जो melt हो रहे हैं, ये आपने सुना होगा कि बहुत सारे viruses जो है उन कैप्स में फ्रोजन स्टेट में है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा और नया आ गया है कि वो जो है रिलीज हो रहे हैं एनवायरमेंट में. ओके, तो इसकी वजह से जैसे हमारा कोविड-19 जो है एक नई जो है प्रॉब्लम थी या नई डिजीज थी, उसी तरीके से नए इन्फेक्शंस, नई डिजीज जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से आउटब्रेक हो रही है. ओके, and finally these four factors affected the agriculture production and post harvest processing. Then obviously if produce is affected, the price will be affected. Okay, and price will affect it, and the quantity of the product will be affected. Not only quantity, quality कैसे, आपके न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है क्रॉप में कम हो सकते हैं, डिजायरेबल जो चीज आपकी है वो कम हो सकती है, प्रोटीन कंटेंट घट सकता है, जो आपके मिनरल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं. ओके, देन फाइनली अगर आपकी क्रॉप अच्छी नहीं है क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली, तो उसका मार्केट और ट्रेड वैल्यू भी कम होगी. ओके, एंड फाइनली इट अफेक्ट द इनकम्स एंड फूड प्राइसेस एंड एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स and other livelihood practices. At last, they affected as a whole, हम कह सकते हैं हमारी food security and nutrition जो है hampered होगी. Availability, assessment of food, utilization of the food and stability of the food will affect. Okay, these are some future predictions. Okay, these are some future prediction about 2030 and 2040. Okay, the prediction in various studies predicted different outcomes. In 2030, the climate change will affect food and farming more strongly, particularly small scale producers in poor countries. Obviously, we know अगर जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं या आपका फार्मर क्या है रिच है, तो इट कैन मिटिगेट सेवरल प्रॉब्लम्स.
ओके बट 2030 तक जो है जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं या जो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इट अफेक्टेड एंड पर्टिकुलरली द पुअर प्रोड्यूसर्स एंड द पुअर कंट्रीज are affected more severely and these are some data okay this is predicted that in northeast Brazil the maize production will decreases by 10%, rice by 14%, wheat production decreased by 14%, again in Central America wheat production is decreased by 9%, rice production is decreased by 10% and wheat production by 4%. In East Africa maize production will be decreased by 3% and bean production by 50%. And in New Zealand, pasture and beef and dairy production will be decreased by the 4%. Okay. And in 2050, the climate impact on food security will be unmistakable. And we will be 9 billion people in this planet on 2050, and most of the people will live in cities, so the demand of the food will increase significantly, but the production will be decreased. Okay, as we can see in red, it represents the average decline in yield for 8 major crops across Africa and South Asia. That is 8%. Okay, and here we can see the marine fisheries affected, which is decreased in 30 to 70%. Okay, in 2050s the temperature will increase by more than 4 degrees Celsius and will endanger the ability of farm and ecosystem to adapt. Okay, 4 degrees is far out. Okay, it changes the intensity, frequency and seasonality of precipitation. The sea level rises and in glaciers, and obviously the groundwater and river flow will be changed. Okay, now अब हम आते हैं अपने फिर से वापस फूड सप्लाई चेन. ओके, as this slide represents the entry points of environmental variability in food supply chain. We can see different environmental variables and economic influences the food supply chain and its cascading effect. Mid में आप देख सकते हैं food supply chain है production, storage and processing, distribution, retail and markets and consumption. And we can see at each step how the environmental variable affecting the particular component and what will be its outcome. Okay, पहले बात करते हैं production पे. There are different components such as algal bloom, coral bleaching, crop and animal disease, drought, extreme temperature and rainfall, flood, pest, natural hazard, wildfires and ENSO. Okay, ENSO is a weather pattern which specifically the Pacific Oceans के ऊपर ये देखने को मिलता है, और ये क्लाइमेट चेंज को स्पेशली जो रेन पैटर्न है या विंड पैटर्न है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है. ओके, these all affected the commodity prices and input supply assets in the production. Obviously अगर ये सब चीजें महंगी होती हैं, commodity prices और input supply assets, then production will be hampered. Production आपका decrease होगा. If production is decreased, तब क्या होगा? Agriculture income जो है कम हो जाएगी, crop switching increase हो जाएगी, which I discussed. जैसे मैंने आपको medicinal plant के बारे में बताया था, that crop switching is increasing, following will increasing, income diversification will increase, natural resource use will increase, product quality will decrease, and the substance will also decrease. Okay, अब हम बात करते हैं next step की storage and processing. Okay, so there are various climatic variables, aflatoxins. Do you know what are aflatoxins? These are toxic compounds, toxins, which produced by the infected seeds, especially कोई भी plant part,
if we not store them properly, they are affected by some fungi or bacteria, and these infection causes them to produce the aflatoxin. Some aflatoxins are so harmful, they act as a neurotoxins. Okay, so if we have a storage problem due to the environmental variable, so it can synthesize the aflatoxin on the plant part, especially on the seed. Okay, extreme humidity will also cause the problem for the storage. Extreme temperature and rainfall, natural hazard, pest, especially the pest which hamper the storage, such as different storage में आपकी crop को खराब करते हैं. Okay, seasonality, wildfires, all these hamper the storage and processing of the agro-food products. अब ये कैसे क्या affect करेगा? This also affect the food prices, storage capacity, electricity, access. We require the proper, if our food storage system require the cold storage or any temperature control, then electricity access होना जरूरी होगा यहाँ पे. Okay. Then अगर हम cascading effect की बात करें तो agriculture income जो है decrease होगी, food safety भी आपकी decrease होगी, processing जो है आपकी processing cost increase हो जाएगा. अगर आपको अपनी crop को protect करना है तो then you require the processed the particular crop. Source switching will enhance, spoilage of the food product will increase, and use of stored product will increase. Okay. Second, the third step is distribution. It is affected by extreme temperature, flood, natural hazard, and wildfires. Okay. What it causes? अगर हम economic influences की बात करें तो it increases. आपका जो fuel price है वो increase होगा. Obviously, food price increase होगा. Transport network जो है, you require the more transport network, and tariffs on the distribution. Okay. What will be the cascading effect? Agriculture income will decrease, market access will decrease, source switching will increase, and spoilage of the product will increase. Okay. Next, आपका जो step है that is retail and markets. What are the factors which are affecting the retail and marketing? Then extreme temperature and rainfall, flood, natural hazard, and wildfires. Economic influences की अगर हम बात करते हैं तो it affected the global market, connectivity to the global markets, electricity access, okay, vertical integration, import tariffs, and food prices. Okay, what will be the cascading effect? Food substitutions will increase, portion size of the food will decrease, price volatility will increase, spoilage of the food product will increase, and food shortages will be increased. Okay, last step आपका consumption level पे अगर हम बात करते हैं तो extreme temperatures, flood, seasonality, natural hazards, and wildfires. Okay, these are the environmental factors. And what are the economic influences? Food safety standards will be affected, food taxes will be affected, transport network will be affected, import tariffs affected, and export restrictions will be affected. Okay, and what will be the cascading effect? Foodborne disease, various foodborne disease, क्योंकि spoilage वगैरह काफी हो सकता है हमारे पास. अगर ये chain की अगर हम बात करें तो हमारे पास काफी पुराना product पहुंचेगा, तो it can affect the incidence of foodborne disease. Okay, food substitution will increase, energy or nutrient intake will decrease, physical and economic access will decrease, portion size will decrease, intake of the processed food will increase, and food spoilage will be increased. So these are the different entry points where the environmental variable enter in a food supply chain and what will be their cascading effect. Okay. Now, अब हम बात करते हैं उन factors की which determine food supply chain in backdrop of this climate change conditions. Okay, there are 8 factors. The first one is physical infrastructure. Okay, let's say अगर कोई in a particular region वहाँ पे जो है जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, प्रॉपर है, have the irrigation and drainage and flood control infrastructure, the storage facilities will are proper. वहाँ पे क्या होगा इन उस केस में जो है जहाँ पे क्या है प्रॉपर आपके पास फैसिलिटीज हैं, प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो कम रहेगा फूड सप्लाई चेन पे. ओके ओके, another factor is geographical distance along the supply chain. Okay, the supply chain which cover a long geographical distance is particularly vulnerable to the climate risk. Okay, सिंपल सी समझ में वाली बात है, अगर कोई ऐसी फूड सप्लाई चेन है जिसको कम डिस्टेंस में ट्रैवल करना है, मतलब प्रोडक्शन से लेके आपको कंजम्पशन तक ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी है, तो उसको स्पॉइल होने का या कोई अदर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में एंटर करने का खतरा कम रहेगा. लेकिन अगर कोई दूसरी फूड चेन है उसको अक्रॉस द ग्लोब क्या करना है, मूव करना है, या कंट्री के एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाना है, इन दैट केस जितनी ज़्यादा जो है किसी पर्टिकुलर फूड सप्लाई चेन में डिस्टेंस किसी फूड सप्लाई चेन को कवर करनी होगी, जोग्राफिकल डिस्टेंस, उतनी ही वो फूड चेन आपकी वनरेबल होगी फॉर द क्लाइमेट चेंजेस. ओके, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ product traceability. Okay, if a particular product, अगर हम एक food supply chain की बात करते हैं, if that required a specific condition such as cold storage, various they are particularly vulnerable to the climate shock. For example, fruit and vegetables. Okay, fruit है, vegetables हैं, आपके dairy products हैं, they required a cold storage chain, या आप उस केस में आपको कोई जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस है उसको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए स्टोरेज के लिए. ठीक है, तो ऐसे एग्रो प्रोडक्ट्स या ऐसी सप्लाई चेन जिसमें प्रोडक्ट को जो है स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती है, दे आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू द क्लाइमेट रिस्क. ओके, अनदर फैक्टर इज फिजिकल इंटेंसिटी इन अ गिवन सेगमेंट. ओके, इफ in a region or in a food supply chain there is a proper facilities of irrigation, farm equipment, cold storage and delivery trucks, then such kind of food chains are less vulnerable to the climate risk. Okay, next, seasonal variability of a food produce. Okay, the food produce या agricultural produce, जो सीजनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, दे आर उनकी जो सप्लाई चेन होती है दैट इज मोर वनरेबल टू द क्लाइमेटिक रिस्क. सेकेंड, नेक्स्ट 7th पॉइंट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंट ऑफ अ सप्लाई चेन. ओके, इफ अ सप्लाई चेन इज गवर्न्ड बाय अ स्मॉल इंडस्ट्री, दैट सप्लाई चेन इज मोर वनरेबल टू द supply chain comparing the supply chain which is governed by a larger industry. Okay, because they have more resources to run the supply chain. Okay, variation over time in one location and over location in the exposure of climate risk. Okay, if we talk about the climate risk, तो पूरे ग्लोब में या अक्रॉस अ कंट्री कुछ रीजन ऐसे होते हैं which are particularly vulnerable to the climate risk, जिनको हम कहते हैं हॉटस्पॉट. ओके, तो सपोज दैट कोई सप्लाई चेन अगर आपको अक्रॉस द हॉटस्पॉट आपको लेके जानी है, तो दैट सप्लाई चेन विल बी मोस्ट वनरेबल टू द क्लाइमेटिक रिस्क. ओके, अगर एज एन होल हम ग्लोब की बात करें या एज एन एक कंट्री की बात करें, तो रीजन जहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएबल जो है पर्टिकुलरली हाई है या पर्टिकुलरली वो लोकेशन आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेटिक हॉटस्पॉट. ओके, एंड those food supply chain which run from those hotspots are particularly vulnerable. Okay, अगर हम ओवरऑल सबकी इन सबको कंपेयर करें और 8th पॉइंट की बात करें, तो ये 8th पॉइंट मतलब जो हॉटस्पॉट है वो ओवरकम कर देता है इन 7th पॉइंट को. ओके, मतलब अगर हमारे पास ये सातों जो चीजें हैं अवेलेबल हैं, हम मिटिगेट कर सकते हैं इन सातों प्रॉब्लम्स को, बट जो 8th प्रॉब्लम है द क्लाइमेटिक हॉटस्पॉट जो है वो इन सब प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है. ओके, नाउ अब आते हैं हम प्रोडक्शन लेवल पे. ठीक है, जो हमारा फोकस पॉइंट है. ठीक है, हाउ
climatic factors या environmental variables affecting the crop productions. अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है ऑन क्रॉप ये दो तरीके से काम करता है, एक तो डायरेक्टली, दूसरा इनडायरेक्टली. डायरेक्टली कैसे? It affected the physical factor. जो climate हम we can see the temperature is changing, the rainfall pattern is changing. We having problem related to irrigation. The incidence of drought are increasing. We having avalanches. या जो भी जो physical factor है, the pH of the soil is changing. Okay, these physical factors directly affected the plant ग्रोथ एंड यील्ड. फ्लड है या आपकी जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है वो डायरेक्टली नहीं क्या कर सकते हैं, आपकी डायरेक्टली वो उसी प्लांट को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, जब जैसे फ्लड है, फ्लड इज डायरेक्टली अफेक्टिंग फ्लड कॉजेज द वाटर लॉगिंग और डायरेक्टली अफेक्टिंग दोज प्लांट इन जहाँ पे भी आपकी वाटर लॉगिंग हुई है. या टेम्परेचर अभी अगर आपने इफ यू नॉट हेयर तो ये जो पैटर्न है, रेनफॉल पैटर्न है, इट अफेक्टेड दी वेरियस क्रॉप्स. स्पेशली उत्तराखंड, आप लोगों ने फिंगर मिलेट या डिफरेंट जो मिलेट्स जो है उत्तराखंड की, उनमें एक प्रॉब्लम अभी आ रही है कि जो ग्रेन है वो मिला नहीं. मतलब प्लांट तो है, प्लांट पूरी अपनी स्टेज में जैसा है, लेकिन जो यील्ड जो हमारा इकोनॉमिक पार्ट है दैट ग्रेन वो मिला नहीं, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग जो फ्रूटिंग के लिए जरूरी होती है वो पॉलिनेशन नहीं, वो फ्लावर आपके पॉलिनेट नहीं हो पाए ड्यू टू दिस एक्सट्रीम रेनफॉल और एनी जो इरेगुलर रेनफॉल जो हुई. तो यहाँ से देखिए, क्योंकि किसी भी फूड सप्लाई चेन में प्रोड्यूस सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर प्रोड्यूस ही आपका जो है उसमें प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम आ रही है तो आगे की चेन तो क्या हो जाएगी, आपकी हैम्पर्ड हो जाएगी. ओके, तो डायरेक्टली भी जो है ये क्या करता है, अफेक्ट करता है सिस्टम को, एग्रीकल्चर सिस्टम को या क्रॉप प्रोडक्शन को. अनदर जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के, दोज आर इनडायरेक्ट. कैसे? आप लोगों ने सुना होगा कि पॉलिनेटर्स जो है वो कम हो रहे. सुना होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल. लोग अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो वहाँ आपको सुनने को मिलता है कि अब हमें कीड़े नहीं दिखते. दैट्स यू हेard. या डिफरेंट जो पॉलिनेटर्स हैं वो जो है कम हो रहे हैं. ठीक है, एंड वी रिक्वायर द प्लांट रिक्वायर पॉलिनेटर्स फॉर ट्रांसफरिंग देयर पॉलिन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. उसी से तो फिर आगे सीड्स बनेगा. ओके, तो इट अगेन these increases the incidence of pests. ठीक है, जैसे लोकस्ट का आपको एग्जांपल बताया था. ओके, various disease vectors are also increases and the cases of invasive species. ठीक है, हमारा जो लेंटाना के हमारा आप नाम सुनते आए होंगे या पार्थेनियम नाम सुनते आए होंगे. अच्छा, ये इन्वेजिव स्पीशीज की बात हो रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. हमारे आप लोग कभी वैली ऑफ फ्लावर गए? आपने ओके, या आपने देखा होगा वहाँ एक वाइट कलर का फ्लावर होता है, वाइट बिल्कुल. पहले अगर आप वैली कोई भी हिमालय कोई भी अल्पाइन एरिया अगर हम बात करते हैं तो अर्लियर डेज में वो पास्चर जो है आपको येलो, पिंक, वॉयलेट, पर्पल डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं. बट अगर आप अब जाते हो तो आपको होल पास्चर्स वाइट नजर आते हैं, बिकॉज एक वहाँ पे एक प्लांट है दैट पॉलीगोनम पॉलीस्टेचियम. ओके, उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर लगते हैं. वैसे तो वो नेटिव प्लांट है, बट द क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज ने उसको इन्वेजिव बना दिया है विद इन इट्स रेंज. ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज जो है इस तरीके से जो है इन्वेजिव स्पीशीज को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है. ठीक है, क्योंकि जो इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं जनरली दे आर हार्डी, दे कैन विदस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रेसर्स. ओके, लेकिन जो हमारी क्रॉप्स होती हैं दे आर नॉट हार्डी, तो इजीली जो है इन्वेजिव स्पीशीज उनको क्या कर सकती है, और रिप्लेस कर सकती है. ओके, दीज इनडायरेक्ट इफेक्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना पॉलिनेटर्स का. इफ अगर पॉलिनेटर्स ही नहीं होंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगा, और व्हाट अबाउट द क्रॉप. ओके, इनके साथ दिक्कत एक और है, आप
जो इनके इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट को आप क्या कर सकते हो, वो सीधे डिटरमाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो भाई कि ज़्यादा रेनफॉल हुई, इस वजह से हमें क्या नहीं मिला, सीड नहीं मिले या अदर कोई चीज़ हमें प्लांट में नहीं मिली, ठीक है। बट अगर हम देखें, अगर हम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को ढूंढें तो इट इज़ हार्ड टू एसेस। काफ़ी लंबा ऑब्जर्वेशन पीरियड हमें इनके लिए चाहिए, ओके। Now these are some effects of the climate change and global warming in the crops or agriculture system. Okay, अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसके थोड़ा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, बट ये पॉजिटिव इफेक्ट के साथ भी एक ट्विस्ट है, we will discuss it later. Okay, तो the positive effect जिसको आप you heard about कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन, ओके, मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इंक्रीज होने से क्या हो सकता है, टेम्पररी पीरियड के लिए जो है क्रॉप्स जो है बेनिफिट हो सकती हैं, स्पेशली ऑन द हायर लैटिट्यूड्स, ओके। It increase the productivity from enhanced CO2 जो ग्रोइंग सीजन है क्रॉप का वो enhance हो सकता है, मैच्योरेशन रेट जो है प्लांट का वो एक्सीलरेट हो सकता है, जो न्यू क्रॉप्स जो है उनके ग्रो करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मॉइस्चर स्ट्रेस जो है डिक्रीज हो जाता है, एंड फाइनली जो प्रोडक्टिविटी है वार्मर टेम्परेचर पे वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ईच एंड प्लांट इज जो प्लांट का जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन से ही तो बना होता है, ठीक है। लेकिन अब इनके साथ दिक्कत क्या है, आगे की स्लाइड्स में इसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। देन व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट, it damages the crop from the extreme heat, the problems due to the less reliable forecast, क्योंकि क्योंकि वेदर पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो वेदर फोरकास्ट होते हैं दे आर नॉट रिलायबल एनीमोर, ओके। इट इंक्रीज द इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस, ओके, it incidence of rain or torrential rain, increase the drought incidences, weed growth आपकी increase हो जाती है, moisture stress will increase and increase the crop various diseases of the crop increases. It increase the ground level ozone which is toxic to green plants, okay. It increases the incidence of stronger storms and flood, and the plant have warming stress, okay. It increases the chances of waterlogged condition in the land, okay, causes the more soil erosion, and the chances of specialized monocropping is increases. This is less adaptable, okay. Again, finally all these components affected the health of the humans, especially the labor, okay, and the pesticide and herbicide की जो efficiency है वो भी आपकी क्या होती है, decrease हो रही है due to this climate change, okay. Now these are some data which depicting the impact of the climate change in the food, okay. As we can see here कि आपके जो 2030 तक जो है आपका जो मेज का प्रोडक्शन है वो 12% तक कम हो जाएगा, लेकिन प्राइसेस जो हैं they will increases up to 90%, okay. The production of rice will decrease by 23%, but the price will hike up to 89%. The wheat production will decrease by 13%, but the price will increase by 75%. Same goes to other crops whose production will be decreased by 8%, but the price will hike by the 83%. Okay? In this other graph, we can see different prediction of different modeling studies which had done on the impact of the climate change on production of the different crops. Okay, it indicated the yield up to 2009. Okay, now मैंने आप लोगों को in earlier slide I talked about some twist. Okay, what is this? Okay, various studies has proved the CO2
or increasing carbon dioxide may increase some yield, okay, but as we know, अगर हम प्लांट की बात करते हैं, the plant metabolism is a linked system, okay. अगर CO2 increase होता है तो it increases the photosynthesis capacity of that plant, okay, मतलब carbon production आपका increase होगा, but there are what about the other component, nutrient, mineral nutrient है, water availability है, वो सब चीजें भी तो है, ठीक है। अगर आपका कार्बन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसको प्लांट में फिक्स करने के लिए प्लांट हैव अ मेटाबॉलिक पाथवे which have different enzyme system or different those enzyme system have a temperature optima, okay, above those temperature optima those enzymes can't work, okay। तो अगर सिर्फ CO2 के इंक्रीज अगर सिर्फ CO2 आपका इंक्रीज होता है तो बात बनती है, लेकिन अदर फैक्टर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो ड्राउट या अदर जो वाटर स्कार्सिटी है या न्यूट्रिएंट की स्कार्सिटी है उससे कैसे कोपर किया जाए, ओके। तो यील्ड जो सिर्फ CO2 की वजह से इंक्रीज हो सकती है, बट अदर फैक्टर्स जो हैं वो उस यील्ड को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। फिर फर्दर एक और चीज जो स्टार्टिंग में पता चली है कि एलिवेटेड CO2 जो है वो कार्बन प्रोडक्ट्स को तो इंक्रीज करता है प्लांट में, बट जो प्रोटीन कंटेंट है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। There are studies on alfalfa and soybean plant which showed that elevated CO2 had been reduced the protein content or total nitrogen content in the plant, okay। अब इससे क्या होगा, आपका जो फूड जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी ना, रिड्यूस हो जाएगी क्वालिटी, क्योंकि कार्ब्स तो है लेकिन प्रोटीन तो है ही नहीं या नाइट्रोजन है ही नहीं, ओके। Again, more extreme temperature and precipitation can prevent the crop from growing. Extreme events, especially flood and drought, can harm crops and reduce yield. Okay. Again, dealing with drought it could become a challenge in the area where rising summer temperature cause soil to become dry. Okay. Although increased irrigation might be possible in some places, in other places water supply may also be reduced, leaving the less water available for the irrigation when more is needed. Okay. Again, the incidences of weed infestation, pest infestation, fungi and other pathogen infection will increases in warmer temperature and wetter climates. Okay. Next, the CO2, increasing CO2 can stimulate the plant growth, which we earlier discussed, but again ये जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है फूड की इसको कम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की सोयाबीन और अल्फाल्फा की, ओके। ऑब्वियसली अगर फाइनली अगर आपकी क्रॉप हैम्पर हो रही है, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी हैम्पर हो रही है, तो अगर स्पेशली हम क्वालिटी की बात करें, न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, तो ऑब्वियसली ह्यूमन पॉपुलेशन जो उसको जो कंज्यूम करने वाली है उसकी हेल्थ भी क्या होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। हमारे पास जो फूड मटेरियल होगा वो लेस प्रोटीन वाला होगा, लेस अदर जो मिनरल कंपोनेंट है वो भी लेस हो सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो अदर कंपोनेंट है और न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है वो क्या होंगे, कम होंगे। स्पेशली ऑब्वियसली अगर हमारे वीड इसके अदर इंटरकनेक्टेड इफेक्ट भी हैं, अगर वीड पेस्ट के इन्फेस्टेशन के फंजाई इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को ज्यादा यूज करेंगे जो कि क्या है, हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन, ओके। Okay, now what are the options which are available for adaptation to climate change at farm level? Okay, farm level पे हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, okay, here in the table here are the risks and here are the possible solution associated with the risk. The first one is changing climate conditions and climate variability and seasonality. How can we overcome this? There are various possible solutions such as participating in monitoring scheme when available for optimization of planting schedule. We can plant the different varieties or species of the cultivar of the crops which is particularly resistant again to different type of climatic stressors.
Okay, we can use the cultivars which can mature on short duration, early ripening variety we can say. We can use the variety or the breed with different environmental optima, and we can use the variety which can tolerate the broader environmental factors. Okay, we can use the crops which are currently neglected, or जैसे हम मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं ना मिलेट्स को क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप बोलते हैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो, कि हम कहते हैं कि मिलेट्स जो है वो जो हार्ड जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको भी विथस्टैंड कर सकते हैं, और स्पेशली दिस द ईयर 2023 इज द ईयर ऑफ मिलेट. Okay, here is the coming 2023. This is dedicated to millet. Okay, we can change the showing time. Okay, we can increase the diversification of variety or crops to hedge against the risk of individual crop failure. अगर हमारे कोई we can diversify our agriculture system. Okay, we can use the intercropping system, make use of integrated system involving livestock and aquaculture to improve the resilience. We can change the post-harvest practices. For example, the extent to which grain may require drying and how products are stored after harvesting. Post-harvesting practices को change कर सकते हैं हम. Consider the effect of new weather pattern on the health and well-being of agriculture workers. Okay. Now, the second risk, that is change in rainfall and water availability, and what may be possible solution for this associated risk. Okay, participate in monitoring scheme. So monitoring is the key. Okay, change the irrigation practices, adopt enhanced water conservation measure, use of marginal and wastewater resources, make more use of rainwater harvesting and capture. In some areas, increased precipitation may allow irrigated or rain-fed agriculture in places where previously it was not possible. Okay, तो ये climate change की वजह से कई बार जो है precipitation pattern जो change हो रहा है, आपने सुना भी होगा ना, कहीं पे पहले ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, अब वहाँ पे ठीक-ठाक बारिश हो रही है. हाँ, especially श्रीनगर. Okay, तो water इससे हमारा जो है water harvesting pattern भी हम अपने change कर सकते हैं. Okay, alter the agronomic practices, reduce the tillage to lessen the water loss. Similarly, the incorporation of manure, composting, and the land use technologies such as cover cropping increase soil organic matter and hence improve the water retention. मतलब overall आपको composting और manure या other cover cropping use करके जो है soil की water holding capacity को क्या करना है, increase करना है. Okay, the third risk is increased frequencies of drought, storm, flood, wildfire event and sea level rise. Okay, आप क्या कर सकते हैं इनके लिए? Again, monitoring जो है उस पर ध्यान दें. Okay, use flood, drought and saline resistant varieties. ऐसी varieties को use करें, अगर flooding भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े उनको. Okay, या drought हो या other कोई conditions हो. ठीक है, improve drainage, improve soil organic matter content and farm design to avoid soil loss and green. Consider the increasing insurance cover against the extreme events. Okay, third problem, that is the problem of pest, weed disease, disruption of pollinator ecosystem services. What can be done? You can participate in risk monitoring and preventing scheme when available. Use expertise in coping with existing pests and diseases, build on natural regulation and strengthen the ecosystem services. Okay. Now, हम बात करते हैं R&D and climate smart agriculture की. Okay. आपके what can the biotechnology and basic science can done for the solving this problem. Okay. There are for selecting creating some new varieties, a new crop which are resistant against particular biotic and abiotic stress. There are three plant sciences which work together.
the physiology, plant physiology, obviously, genomics and molecular and integrated breeding. Okay, by plant physiology, what we can done, we can screen the different available germplasm of a particular crop species against a different type of stress. Okay, this germplasm, by screening different type of germplasm, we can come across a particular germplasm, a particular accession or particular germplasm which is resistant for a particular stress, and we can done the whole genomic study of that particular plant which we found resistant. Okay, we can isolate a particular gene from that plant, or we can utilize this whole genome of that plant, या whole plant आप utilize कर सकते हो in traditional breeding programs for developing a new variety which is resistant for a particular stress, or we can develop new variety which are resistant to particular biotic and abiotic stress by two way, by traditional genetic breeding program, और आप hybrid सुनते होंगे, इस तरीके की चीजें आप सुनते होंगे. Okay, और another is genetic engineering, as आप GMOs के बारे में आपको पता होगा, genetically modified organisms. ठीक है, जैसे आपने बीजी कॉटन वगैरह आपने ऊपर सुना हो, ठीक है, these all are produced genetic engineering. Okay, so by using those tools, we can not be the various institutions or person associated with those can produce new variety of a particular crop which is resistant to a particular stress. Okay, now what other thing we can do? No tillage practices. Okay, we can modify the nitrogen use efficiency of a particular crop. We can use the drought tolerant variety, heat tolerant variety. We can use the integrated soil fertility management system. We can modify the water harvesting system. Okay, we can use precision agriculture system. We can use the crop protection, crop management, integrated pest management system. Okay, we can emphasize on organic agriculture. We can promote the drip irrigation and sprinkler irrigations. Okay, these are all the steps of climate smart agriculture. Okay, now अब आते हैं हम, ये तो हमने बात की production की, how production is hampered and what can we do for mitigating those problems. Now अब हम आते हैं potential responses to the environmental variability across the supply chain. Okay, now in this table we will discuss different steps of supply chain and the responses which can be adapted for mitigating the impact of the climate change. And there we can see on there are different component, the actors which involve in those responses. Such कुछ चीजें ऐसी हैं which we can done on the individual level, कुछ ऐसी हैं which we have done on governmental level, कुछ private sector पे की जाती हैं, कुछ चीजें आपकी की जा सकती हैं intergovernmental organization level पे, कुछ आपकी जो civil societies जो होती हैं उनके basis पे, या आपके NGOs जो होते हैं उनके basis वो उस चीज को कर सकते हैं. Next इसमें है आपका time scale, कि आप short duration period के लिए इन responses को अपना सकते हैं, या कुछ time period के लिए, या comparatively longer time period के लिए. Okay, next इसमें है आपके जो problems जो हैं, associated problems हैं, जिनके लिए आप इन responses को जो है अपना सकते हैं. There are flood, drought, salination, extreme temperature, ENSOs and the escalations, raising and pests, natural disasters, price, and some unspecified climatic shock. Okay, this cross represent the action. Okay, now supply chain. पहले हम बात करते हैं production. Okay, the first thing, the response is subsidies.
वो कौन दे सकता है? इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल नहीं है। जो गवर्नमेंट है या आपके इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और ये आपके शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी हो सकती है और कंपैरेटिवली थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए, सीजनल या डिकेजनल के लिए, ओके। देन अब किन चीज़ों के लिए या आप किन चीज़ों कहाँ पे ये आपकी इफेक्टिव हो सकती है? एनएसओ एंड अदर ऑस्किलेशंस पे और आपके जो प्राइस जो अनस्टेबिलिटी है वहाँ पे ये काम कर सकती है। दूसरा इसमें आपका आता है दैट सेल्फ सफिशिएंसी टारगेट्स, ठीक है। ये अगेन ये आपके जो है गवर्नमेंट लेवल पे की जा सकती है, ओके। इट इज ये आपके जो डिक्टेटर या सीजनल लेवल पे हो सकती है या कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए हो सकती है, ओके। नेक्स्ट इसमें आपका है एक्सपोर्ट टैबो। This will also can be done on the governmental level and आपके जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड और सीजनल और डिकेजनल पीरियड, ओके। ओके, अगेन नेक्स्ट आपका इसमें आता है इन्वेस्टमेंट इन एक्सटेंशन व्हिच इज done at the governmental level, at the private sector level and at the civil society and जो आपके NGOs है उसके लेवल पे ये चीजें की जा सकती हैं। अगेन this can be done for the जो आपके सीजनल और डिकेजनल लेवल पे आप इसको कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी इसको किया जा सकता है। It can be done for the variety of the environmental variable, okay. It can be done for the drought, salination, extreme temperature and disease and pest, okay. Next आपका है crop and index insurance which can be done on the individual level, okay. गवर्नमेंटल लेवल पे भी ये सब रिस्पॉन्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है। and it can be done by the intergovernmental organizations, आपके civil societies और NGO लेवल पे आप इसको कर सकते हैं, okay. It can be done for the आपके ये seasonal और decadal level या long term level के लिए आप इसको कर सकते हैं, okay. Increase access to the credit, okay. It can be done at the governmental level, okay. जो आपके प्राइवेट सेक्टर लेवल है वो भी इसमें काम कर सकते हैं और आपके अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन R&D, ठीक है। तो ये तो आपके मेनली गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है, ठीक है, या हायर अप लेवल पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपके प्राइवेट सेक्टर में भी जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये आपके लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी हो सकती हैं और सीजनल या डिकेजनल पीरियड के लिए भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो भी सकती हैं, ओके। नेक्स्ट इसमें शिफ्ट ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवर्स एंड स्पीशीज, ब्रीड रेसिस्टेंट वैरायटीज, फॉर एग्जांपल ड्राउट एंड पेस्ट, ओके। ये मेनली आपकी आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो, यू शुड चूज variety or the crop whatever you want, okay. It can also done at the governmental level, at the private sector level, and almost each and every actor can play their role here, okay. It can be done for season and decadal level and for the long term period, और आपका flood, drought, salination, extreme temperature, okay, disease and pest management and pest infestation और natural disasters के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसमें आपका आता है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ऑन फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आप ये जो है अगेन आप जो है ये आप इंडिविजुअल लेवल पे, ये भी आप ईच एंड एवरी लेवल पे किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, अगेन इसमें भी आपका जो है प्राइवेट सेक्टर छोड़ के, ठीक है, ईच एंड एवरी प्लेयर जो है अपना रोल प्ले कर सकता है, ओके। एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट फॉर द फ्लड, ड्राउट एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट इसमें आपका है एडॉप्शन ऑफ द एग्रोकेमिकल्स, ठीक है। अगेन ये आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं, ईच एंड एवरी लेवल पे ये चीज़ें हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, ओके। अगेन दिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट ड्राउट एंड डिजीज एंड
पेस्ट. ओके, नेक्स्ट इसमें माइग्रेशन और रीलोकेशन. ठीक है, ये तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं और जनरली ये आपका सीजनल टू डेकेडल या लॉन्ग टर्म के लिए भी माइग्रेशन हो सकता है. अगेन इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द फ्लड, ड्राउट, सैलिनेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. ओके, नाउ इसमें कुछ और चीजें भी हैं. द फर्स्ट दैट प्रोडक्शन लेवल पे जो चेंजेस या जो रिस्पॉन्सेज जनरेट किए जा सकते हैं, दैट ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगेन ये आपका इंडिविजुअल लेवल पे है. ठीक है, इट मे बी फॉर द शॉर्ट टर्म और सीजनल. ओके, इट विल बी effective against the flood, drought, salination, extreme temperature, okay, disease and pest and natural disasters. Okay, suspending cultivation, again it will be done on the individual level, and for the short term or for short term period it is effective against the drought. Okay, selling of the assets is depend on again individual level. Okay, it can be done for short term and seasonal level. Okay, it is effective against flood, drought and extreme temperature. Okay, diversification of production. Okay, it can be done on the individual level or the governmental level, and various intergovernmental organizations, civil societies and NGO can help here. Okay, and it can be done for the seasonal or for the long term period. Okay, it is effective against drought and extreme temperature. Okay, next is investment in early warning system. Okay, it can be done by the government, the private sector and the other organizations. Okay, it can be it is particularly effective against the ENSOs and other oscillations. Okay, soil and water conservation, it can be done at individual level, governmental level, intergovernmental organizations, NGOs can help here. Okay, and it is effective against flood and drought and extreme temperature and unspecified climate shock. Okay, again the timing we can change the timing or showing or can shift the timing of planting. Okay, it can be done again at the individual level, at the governmental level, at the NGOs or CSOs level. It can be done for the short time of the period and effective against flood, drought, salination, extreme temperature and disease and pest. Okay, next is relocate, expand production or grazing area. It can be done again at the individual level, at the governmental level, and for the short term period, for seasonal level. Okay, and effective against flood, drought, salination, extreme temperature and various pest and disease. Okay, next is housing livestock. Again, it can be done at the individual level, governmental level, private sector can have, and various CSOs and NGOs. For it can be done for the shorter duration and effective against the drought. Okay, now अब हम बात करते हैं अदर जो सप्लाई चेन के स्टेप्स हैं उनकी. ओके, तो प्रोडक्शन की बात होगी. नाउ अब हम बात करते हैं स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग में क्या रिस्पॉन्सेज हम जनरेट कर सकते हैं. स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स एंड फूड स्टोरेज. ओके, it can be done at the governmental level and for the seasonal time period. Okay, it can be effective against the flood and the drought and other natural disaster. Investment in storage infrastructure including cold storage. Okay, it can be done at the individual level, at the governmental level, at the private sector level, at almost every agency can help here. Okay, again it can be done for the season or decadal level or for the long term. Okay, next is fortification of staples and processed food. Okay, it can be done at the governmental level, private sector, and your intergovernmental organizations and other CSOs and NGOs can help here. Okay, it can be done for the short time term as seasonal or decadal level. Okay, next is investment in primary processing, for example solar drying. Okay, अगेन ये आप इंडिविजुअल लेवल पे भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट लेवल पे किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प हियर,
and various CSOs and NGOs can help here. Okay, it can be it can be done for the seasonal level. Okay, and effective against the flood, drought, and in source like the oscillations. Okay. Next, product reformulations of the ultra processed food. It can be done by the private sector, seasonal to decadal level पे आप इसको किया जा सकता है and long term के लिए भी इसको कर सकते हैं. Okay. Strengthen the food safety standard. It can be done by the government, the private sector, and various intergovernmental organizations. Okay. It can be done for the decadal level or for the long time. Okay. Now, अब डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे क्या चेंजेस किए जा सकते हैं. ओके, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट टैरिफ एंड सैंक्शंस अगेन इट कैन डन बाय द गवर्नमेंट, IGOs एंड वेरियस CSOs. ओके, ये आप जो है लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए भी किया जा सकता है और सीजनल और डिकेडल टाइम पीरियड के लिए. ओके, सोर्सिंग द रेगुलेशंस अगेन इट कैन डन बाय द गवर्नमेंट. Okay, investment in road and infrastructure, obviously the responsibility generated by the government, and vertical integration, it is done by the intergovernmental organizations for the short time period as well as for the long time period. Okay, next, और इसमें जो आपके दो लास्ट रहेंगे, the first the retail and markets, and for consumption level पे क्या changes किए जा सकते हैं. उसको रिटेल एंड मार्केट्स की हम बात करें तो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स इट कैन बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, CSOs, NGOs फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड और एज वेल एज फॉर द comparatively larger longer time period. Okay, change in packaging including the smaller size and resistant to high temperature, again it can be done by the private sector or okay, or it can be done for the seasonal or decadal time period. Marketing, the response will be generated by the private sector, okay, and for the seasonal and decadal time period. Okay, next is investment in market. It can be done by the government, okay, on seasonal and decadal as well as for the long term time period. Investment in market and infrastructure, okay, it can be done by the government. Okay, taxes and subsidies, it can be done by the again government. Okay, strengthen the food safety and standard. Okay, can done by the government, private sector, and intergovernmental organizations for the seasonal and decadal period as well as for the long term. Okay, now consumptions की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आती है आपकी इंडिविजुअल की जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे है दैट इंडिविजुअल लेवल पे है. ओके, behavioral change communication aimed at the shifting consumption pattern. It can be done by the that individual level पे ये जब चीजें हो सकती हैं, sorry governmental level पे हो सकती हैं, not individual level. Okay, it can be done by the various intergovernmental organizations, CSOs and NGOs for the seasonal time period. So social safety net, for example, conditional cash transfers and so on. Again, it can done by the government, intergovernmental organizations, NGOs and CSOs for the short term period. Okay, food supplementation and ad. Again, it can done by the government. Okay, here various intergovernmental organizations, CSOs for the short time period. Okay, food supplementation like micronutrient powder can done by the government. Okay, behavioral change communication aimed at the improving water, sanitation, hygiene practices. It can also done by the government. And the dietary shift, ये जो है ये आप सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही कर सकते हैं. Okay, so this is a response towards the various climatic variabilities in a food supply chain. Now, what other thing we can do? Support the inclusive institutions and strengthen accountability. सबसे important है raising the gender gaps. Okay, there are various countries or various agriculture system where the backbone of agriculture system are women. ठीक है, तो उस केस में जो है प्रोडक्शन हमारा जो है इंक्रीज होता रहे, सस्टेन रहे सप्लाई चेन, तो वी हैव टू ब्रिज दोज gaps. Okay, reform institution and governments to ensure the women empowerment. Okay,
Women empowerment in agriculture index measures the gender parity in decision about agriculture productions, access to and decision-making power over productive resources, control over use of income, leadership in the community, and time use. ठीक है? तो all these factors जो है यहाँ पे जो है women की जो है भूमिका होनी चाहिए, women empowerment होना चाहिए. Okay? Next जो है यहाँ पे आती है promote the multiple wind technologies. There are various technologies जिनको promote करने की ज़रूरत है for sustaining the supply chain. Invest in evidence-based technology such as remote sensing technology for enhanced resilience. Okay, remote sensing-based information and insurance for crop in emerging economics. Maps and observes rice growth in Cambodia, India, Indonesia, Thailand, Vietnam to facilitate crop insurance and guard against crop failure. These are the example. Okay, precision agriculture for the sustainable yield enhancement. Okay, microdosing in Niger, Mali, Burkina Faso saw millet yield increase by over 50%. Okay, improve climate resilient variety. Okay, using the disease-resistant lentil variety in Bangladesh increases the yield by 27%. Okay. Nutrition driven nutrition sensitive technology जिसको बायोफोर्टिफिकेशन हम बोलते हैं कि कम अमाउंट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाए. जैसे आपका गोल्डन राइस के बारे में आपने सुना हो या अदर एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं. न्यूट्रिएंट बायोफोर्टिफिकेशन. ओके, एग्जाम्पल है more than 30 million people are consuming one or more of 12 vitamins and mineral rich biofortified crops globally. Okay. Now at last mutual learning. ठीक है, जो भी knowledge मिलती है by different R&D on various practices, there's technology और वो knowledge जो है वो must be जो है आपकी share होनी चाहिए, तभी जो है global level पे किया जा सकता है. Okay, we have to share the key experiences on what has worked and what has not worked, promote technology transfer, contribute to capacity building, improve infrastructure in developing countries. Okay, we explore the new modalities beyond the traditional bilateral cooperation and engage in the global governance in agriculture and food. Okay, now these are the references. Thank you. Okay. Any questions or queries? Nothing. चलिए, कुछ पूछना नहीं है? Any discussion, anything is coming in your mind? You want to pass? Yeah. No. Okay, चलिए सर को बुला दीजिए.
multitasking. So there are two meanings that या you तो supply, you transfer all the information to them. Otherwise, they didn't get anything. okay. तो I don't क्या know है? what is I the want to know your first one or second one. First one. You got all things. You Okay. can ask them to we can check Okay, them. can I? So, thank you very much, madam. It Thank is you, a sir. quite interesting and informative session. Thank you, sir. I'm honored. Thank you. Thank you for giving me this chance. So this is one of the Thank you. Oh, thank you. this happening. Thank you, madam. Thank you. कोई क्वेश्चंस पूछा जाए आपसे? मैं पूछ लूं फिर? ये दूसरा तरीका है. मैक्सिमम शायद क्योंकि आप लोग सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर साइंस. ओके, तो ज्यादातर प्लान बेस्ड था, समझ आ गई आपकी चीजें? आई मेड इट सिंपलीफाइड. Any attendance is there 100% or you said 100%, right? So क्या है next course of action? Photograph? Yes. एक group photograph. बिल्कुल सर. Question. क्या? नहीं कर ले. वो मैडम एक मिनट आपको दे दे. ठीक है मैडम, थैंक यू. अच्छा एक फॉर्मेलिटी हो गया आपका सेशन?
हाँ सर, आप कॉल कर रहे थे? मैं यहीं हूँ सर, NIT। हाँ हम आगे चले जाएंगे। क्या? अच्छा भाई नहीं वो तो चाहिए, साथ में चले जाऊँगा। हाँ हाँ देखता हूँ, मतलब देखता हूँ सर, कल परसों चले जाएंगे, वो अपने 31 तक तारीख है अभी तो। देखते हैं। हाँ चले जाएंगे सर, मतलब तब आ जाऊँगा मैं लंच के बाद। हाँ हाँ जी।